Assalamu alaikum dear viewers. I am Anuddin Kibzai and I welcome you all to my YouTube channel. As you know that we have started an online English language course that comprises different portions related to English grammar. Today's lecture is actually a short demo, and in this lecture we are going to discuss the comparison between in and into and on and onto. Now just let's discuss that and sort this problem out. In order to understand the difference between in and into, we have to study to as well. We'll be switching language to Urdu as well so that the students are able to understand in a more appropriate manner, an easier manner. Now, whenever we talk about a preposition to, it shows movement, right? So it means that whenever there is a movement there, we use to. For example, he is going to school, he is going to office. So this one is clear that to is used whenever we talk about some movement. Now, when we talk about in actually means that there is some place and there is something inside it, right? That is covered from all the four dimensions. And now come to the most complicated of the three, and that is into. Into means something that is in the form of movement, and when the movement is completed, right? And once the movement is completed, we are going to use the preposition in. How? For example, there is a person, he is going to his office. So we know that some movement is taking place. Now, as the person is about to enter the office, then we use the preposition into. It means that now the movement is actually taking him from one portion into another portion. So we'll say that he is walking into his office. And once the movement is completed, then we'll say that he is in his office. Right? इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं. अगर आप देखें कि कोई चीज या कोई शख्स किसी तरफ मूव कर रहा है, मूवमेंट में है, तो फिर हम यूज करेंगे टू. अच्छा, अब अगर उसकी मूवमेंट ऐसी है कि उसने किसी जगह एंटर होना है, अंदर जाना है, राइट? तो इसलिए एंटर होने के लिए टू और अंदर के लिए इन. सो इनटू मींस कि अब वो किसी जगह के अंदर जाने लगा है. अच्छा, जब वो अंदर चला जाएगा, उसकी मूवमेंट कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर हम यूज करेंगे इन. इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं. You must have come across a question in the exam कि जिसमें आपको एक पैराग्राफ दिया गया होता है और आपको ये कहते हैं पैराग्राफ को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, राइट? अब अगर आप देखें, सपोज दिस इज अ लाइन, इस तरफ आपको जितना भी वो पैराग्राफ मिलेगा वो उर्दू में होगा. सो इट मींस दैट दिस पैराग्राफ इज रिटन इन उर्दू. अच्छा, अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी मूवमेंट शुरू हो जाएगी इस पोर्शन से इस पोर्शन की तरफ. अच्छा, जब ये मूवमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आप ये कहेंगे कि दिस पैराग्राफ इज रिटन इन इंग्लिश. अब इनटू हमने कहा यूज किया कि जब ये मूवमेंट चल रही थी, जब आप पैराग्राफ ट्रांसलेट कर रहे थे, इसलिए हम यूज करते हैं कि ट्रांसलेट द पैराग्राफ फ्रॉम उर्दू इनटू इंग्लिश, राइट? इसकी एक और छोटी सी एग्जांपल देखते हैं. एग्जाम में एक सेंटेंस दिया होता है कि द बॉय जंप्स इनटू द रिवर, राइट? इट मींस दैट जब वो जंप कर रहा है, ही इज इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट. तो जब उसकी मूवमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम कहेंगे इन द रिवर, राइट? This is actually the difference between in and into, and in order to understand this very difference, you have to keep in consideration another preposition, that is to.
Now let's come to the second comparison. The comparison or the difference between on and onto. But just like I told you earlier, that in order to understand this very difference, we'll have to focus on this preposition as well. Now let's sort this problem out. To, again, क्या शो करेगा? Movement, right? On, कोई चीज है वो किसी दूसरी चीज के सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है, राइट? तो फिर हम इसके लिए यूज करेंगे ऑन. अच्छा, अब हम ऑन टू का यूज करेंगे. सपोज देयर इज a chair and there is a table. Now there is a cat and its position is on the chair, right? It means that its position is there, not changing its position at the moment. तो फिर हम ये कहेंगे कि the cat is on the chair. Now what the cat is trying to do, अब वो jump करने लगी है, right? So it means that it is in the form of movement. अच्छा, जब उसने jump complete की, now it is on the surface of the table. तो फिर हम ये कहेंगे कि the cat is on the table. अब जब इसकी ये मूवमेंट हो रही थी, जब ये पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह चेंज कर रही थी और जब उसकी वो मूवमेंट कंप्लीट हुई तो फिर हमने यूज किया ऑन. तो इसलिए ये मूवमेंट वाला जो पोर्शन है इसके लिए हम यूज करेंगे प्रेपोजिशन ऑन टू, राइट? तो अगर आपको एक सेंटेंस मिलता है कि जिसमें ये लिखा होगा कि द कैट जंप्स फ्रॉम द चेयर टू द टेबल, तो ये गलत होगा. द कैट जंप्स फ्रॉम द चेयर ऑन टू द टेबल. सो आई होप द डिफरेंस बिटवीन इन एंड इनटू एंड ऑन एंड ऑनटू इज clear for you. If you still have any confusion, you can ask in the comment box. After 3 days, we are going to start our English language course. If you have not subscribed to my channel yet, subscribe to my channel, press the bell icon. So, whenever a new video is uploaded, you will get a notification. Thank you very much. See you next time. Allah Hafiz.